So let's start our today's class. In our today's class, we will discuss NCERT questions of chapter 7 of civics. Okay. So who will read first question? Sejal, can you read beta? Riya, Yash, Yes, on your ma'am. video beta. Yes, ma'am. Can I read? No, no. In Riya, your wait, beta. Sejal, wait for a second. Riya, Sahil, everybody on your video. First question is Sejal is reading first question. Okay. Yes, Sejal beta. Read out. write in your words two or more sentences of what you understand by the word marginalization. Okay. So in this question you have to give meaning of marginalization. तो मार्जिनलाइजेशन से आप पूरा चैप्टर आपने पढ़ा तो आपने क्या समझा क्या है मार्जिनलाइज पर्सन्स मीन्स पर्सन हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस फाइन दोज आर मार्जिनलाइज पर्सन मीन्स एक मार्जिन फिक्स कर दिया जाता है दे आर नॉट पर्टिकुलर रेजिडेंस ऑफ और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी दे आर कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स ओके सो मार्जिन ठीक है फ्रॉम मार्जिन इट इज कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड persons और marginalized community okay next question Riya can you read next question beta Ma'am, list two reasons why Adivasis are becoming increasing. Riya you are not audible to me Right, list two reasons why Adivasis are becoming increasingly marginalized. okay Adivasis increasingly marginalized as we already discussed in our chapter also that for mining purpose there are so many business purposes there are so many business projects are working on the forest for which we need forest ना तो उसके लिए क्या करते हैं बिजनेस पर्सन क्या करते हैं फॉरेस्ट में जाके हम आजकल फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं हमारे हर पर्पज़ के लिए और अगर वहाँ पे ऑलरेडी कोई कम्युनिटी सेटल्ड है तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे हम फॉरेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते हैं सो फॉर आर दैट पर्पज दैट आदिवासी कम्युनिटी नीड टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दोज प्लेसेस ठीक है तो फॉरेस्ट को हम आजकल बहुत ज़्यादा अपने हर पर्पज़ में और माइनिंग वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं सो दोज आदिवासी पर्सनस नीड टू डिस्प्लेस फ्रॉम देयर एंड दे नीड टू सेटल इन सिटीज़ एंड टाउन और नियर बाय प्लेसेस टू द फॉरेस्ट ओनली ठीक है इसीलिए जो आदिवासी हैं वो क्या कर रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज प्रोजेक्ट्स विच आर बेस्ड ऑन फॉरेस्ट आर इंक्रीज डे बाय डे ओके बेटा is it clear to Yes, you ma'am. is it clear to you okay fine very good Yash are you there Yes, ma'am. Yash Yes, ma'am. on your video Yash is disconnected Vaishnavi are you there beta Vaishnavi Ma'am, can I read, ma'am? I am Yes, disconnected. okay. Yes, you can read. Vaishnavi, next question you will read, beta. Question number 3. Write one reason why you think the Constitution's safeguard to protect minority communities are very important. Okay, beta. So, do you think that if Constitution is providing safeguard to these minority community, so is it important or it's not important that if Constitution will not provide any safeguard to these communities, then it is okay. So, what do you think? Should we provide safeguard to Yes, ma'am. yes Yes, ma'am. we should provide safeguard to them that's why constitution is also providing safeguard to them because these people are in minority and majority community will dominate them if constitution will not provide them safeguard regarding their fundamental rights okay if they are having fundamental rights if they are having safeguard
from the point of view of the constitution also, then they are confident that if there is anything happened wrong with them, so they can also raise their voice in front of the law. Okay, so that's why constitution is also providing safeguard to these minority communities. Because the community which is in major should also know that if we will violate their rights, then there is the law who will save them against our these behavior if we will not treat them equally, if we will not provide them their fundamental rights. Okay, so that's why constitution is also providing them safeguard to protect from the majority community. Okay, clear to you beta? Yes, Yes, ma'am. Okay, Yes, good. ma'am. Yes, Next, ma'am. Vaishnavi, are you there in the class beta? Yes, ma'am. Okay, let me check. Yes, Vaishnavi, yes, fine bache. Read out next question. Reread the section on minorities and marginalization. What do you understand by the term minority? Okay, means in this question you need to give the meaning of minority. What do you mean by minority? Can anybody Ma'am, tell the me? community that is, ma'am, can I? Yes. Ma'am, the community that is small number or large in number No. or rest of the population. Ma'am, small in number only. Only small in number, not large in number. Now, in small number, in large number And is large majority. Okay, your answer is correct, but somewhere it's Okay, incorrect ma'am. also. Okay, if you are using term minority, then you need to use word small number. Okay, and if you are explaining the term majority, then you need to use word large number. Okay, minor means small. Okay, for minority it's small number. Okay, and for majority it's large number. बच्चे clear to you? Yes, ma'am. Okay. Next Yes, question. ma'am. Chanchal, are you there in the class? Chanchal beta. Yes, ma'am. Okay. Can you read next question? You are participating in a debate where you have to provide reasons to support the following statement. Muslims are a marginalized community. Using the data provided in this chapter, list 2 reasons that you would give. Okay, fine. Means बच्चे question is saying कि according to the chapter we are saying that Muslims are marginalized person. Okay, and if in a debate you are in support of that statement that Muslims are in minority and they are marginalized also. Means question is saying that you need to answer in favor of that, not in against that. Okay, so how you will answer this statement in favor? First we will explain that what are the facility, or we can explain from the point of view of education also. We can explain the literacy rate of Muslims, or we can also basic facility which are availed by the Muslims community as compared to any another community. Okay, so in this question is asking about any 2 points now. So first we can discuss about the literacy rate on the chapter only. Okay, literacy rate is very less as compared to the any other community. Okay, if you will read the chapter, as we already discussed also, that only 59% is the literacy rate for the Muslim community, which is bit of very less if we compare it with another community of India. Okay, so on the basis of this literacy rate we can say that Muslims are in marginalized or in minority, means minority be and marginalized be. Okay, another thing on which we can debate in favor, there is a basic need, and in our chapter we will use the electricity as a basic need. Data is also given in your book only, that
electricity, 43.2% Hindu are in using electricity. Fine. And if we are comparing this data with the Hindu, then Hindu are using 43.2% and Muslims are using only 30% electricity. Okay, why we are not providing equal electricity? बीच में break हो गई. Voice is breaking. Wait. I am sitting at my No own मैम place. बीच में break हुई थी. Okay, now is it okay? Yes ma'am. Okay, that can be network problem, Yes, बच्चे. ma'am. That can be network issue. I am sitting my own place. मैंने तो चेंज ही नहीं किया, मैं तो यहीं पे हूँ. It can be network problem. अभी क्लियर है ना? Yes ma'am. ओके फाइन. हमने लिटरेसी रेट का डिस्कस किया. दैट लिटरेसी रेट जो है दैट इज 59%, विच इज़ वेरी लेस इफ वी कंपेयर इट विद अनदर कम्युनिटी. नेक्स्ट वी आर यूजिंग अ बेसिक फैसिलिटी दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. 2% Hindus are access electricity, but only 30% Muslims are using electricity. Okay, which is very less, 43.2 and 30. Okay, this is some how near 13.2 का डिफरेंस आ जाता है इन द बेसिक नीड जो हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑन विच वी कैन डिबेट इन फेवर ऑफ द Muslim community, that they are marginalized, they are in minority, and they are not using proper facilities, and even they are not getting adequate facilities. Okay, if they will use it for their consumption. Okay, but if they are not getting that how they will use na? So this is the main point. Next point is clear to you? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Yes, ma'am. No. मेरी रिकॉर्डिंग चल रही, वो सुनेगा, वो फिर भी सुनेगा. क्यों? वो फिर भी सुनेगा. मैं बाद में बताऊंगी आपको. अभी जाओ प्लीज. ओके. जैकेट पहन लो. यही सही है. यस बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Daksh, are you there, beta? Daksh, Harshita. Yes ma'am. Okay, beta. Daksh, on your video and read out next question. When you are participating in a debate where you have to provide reasons to support the following statement. Muslims are a marginalized community. It's already done. The previous question. It's already done, beta. Read out next question. Okay. Imagine that you are watching the Republic Day parade on TV with a friend and she remarks, "Look at these tribals. They look so exotic and they seem to be dancing all the time. List 3 things that you would tell about the lives of Adivasis in India." Okay, fine. Daksh, you were not attentive in the class. That's why you didn't know that which question we were discussing and next which question we have to discuss. ठीक है. Okay, बच्चे. For this answer, do you know that we have discussed a story which is given in your book? Story of Adivasi during Republic Day parade. They were also showing them, they are also representing them with the help of their dance. Then the children also asked that every time why they are representing us with the help of dance only. Don't they have anything to represent us? So what was the answer? The answer which was given by their grandfather, that people are Adivasi people are living in the forest only. Okay, and general peoples who don't know about these Adivasi people don't have complete knowledge about their, you can say, occupation, or they don't have complete knowledge about their own community. These community are very rich community. If we studied about their religion, culture, and other rituals, so these are very rich if we compare them with other community, but people don't know anything about these communities.
ठीक है, उन्हें उनके कल्चर का नहीं पता, उन्हें उनके रिलीजन का नहीं पता, उन्हें उनका जो बेसिक जो जिस तरीके से वो कॉमनली रहते हैं, जो चीज़ जो रिचुअल्स वो फॉलो करते हैं, उन्हें उनका नहीं पता है। ठीक है, सो उन्हें क्या पता है, सिर्फ जिसको वो क्या करते हैं, शो कर देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, दे डोंट नो अबाउट एनी टेक्नोलॉजी, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी उनके यूज़ की ही नहीं है। जब चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया था उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहते हैं और जो नेचुरल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दे आर डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट, फॉर देयर डेली नीड प्रोडक्ट्स दे आर गेटिंग मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम देयर एनिमल्स ओनली। ठीक है, एंड इवन फॉर द हॉस्पिटल ऑल्सो दे नेवर यूज टू गो टू फॉरेस्ट, ट्रीज एंड प्लांट्स दे आर ट्रीटिंग देमसेल्फ। ठीक है, तो जो जनरल कम्युनिटी है जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों की नॉलेज ही नहीं होती है, दैट हाउ दे आर ट्रीटिंग देमसेल्फ, हाउ दे आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट। ठीक है, टेक्नोलॉजी जिस चीज़ की आपको यूज़ नहीं है उस चीज़ की आपको नॉलेज भी नहीं होगी, दैट्स वाई दे आर सेइंग देम बैकवर्ड। फाइन, चैप्टर एक्सप्लेन किया उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि आदिवासी भी तो बोल सकते हैं ना, कि जो जनरल पब्लिक है उन्हें फॉरेस्ट के इतने सारे यूजेस का नहीं पता है, जो अपने आप को इतने एडवांस और जो अपने आप को इतना वेल एजुकेटेड बोलते हैं। जो यूजेस हमें पता है वो यूजेस उन्हें नहीं पता है। सो बस इतना ही है कि उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनके यूज की नहीं है वो टेक्नोलॉजी। दैट्स व्हाई दे कॉल देम बैकवर्ड एंड एक्सोटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Questions are over, or is there any question left? Ma'am, left. Yes, ma'am. 2 questions left. Okay, fine, read out. Ma'am, can I? Wait, Riya. Vanshika, who is from the idea of Vanshika Mehra? Rajan Yadav, Aditya Denkar, Mrityunjay Verma, all in one channel, Harshita, poor gamer. Are you there in the class or not? No? Will remove you? Wait. Yes, ma'am. Wait. Vanshika Mishra, are you there in the class? Tell me yes or no, otherwise I will remove you. Aditya? Yes, ma'am. ओके फाइन, अभी रिमूव ही करने वाली थी मैं आपको। यस आदित्य, ऑन योर वीडियो। ओके, इट्स क्रिश, फाइन क्रिश बेटा। आदित्य, रीड आउट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। In the storyboard, you about how Helen hopes to make a movie on the story. Can you help her by developing a short story on Adivasis? ओके फाइन। बच्चे, जब वो स्टोरी हमने हेलन और सोमा की डिस्कस की थी उसके बाद उन्होंने बताया था ना कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इस पूरी स्टोरी पे क्या बनाऊंगी, मूवी बनाऊंगी, बोला था ना। और उनके ग्रैंडफादर ने क्या बोला था कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे घूमने भी जाना, ताकि उन्हें भी पता चले दैट हाउ आदिवासी पर्सन्स आर रिच। दे आर नॉट रिच इन द फॉर्म ऑफ मनी, बट दे आर रिच इन द कल्चर एंड रिलीजियन, दे आर रिच इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल्स। सो अगर आपको बोला जाए कि आदिवासी पे स्टोरी बनानी है, सो व्हाट स्टोरी यू विल टेल हर? यस, And that they use forest products for their daily needs and for any medical purpose. okay, good. And for that they need to cut the forest. There is not any project who they can be successful if they are not cutting forest. They used to cut those forest. ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें वो विदाउट कटिंग फॉरेस्ट अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सके। फाइन, उनके सब प्रोजेक्ट्स में क्या है, दे नीड टू कट द फॉरेस्ट ओनली। एनी अदर पॉइंट? और उनकी स्टोरी में आप क्या इंक्लूड करवा सकते हो? क्रेश, आर यू देयर? क्रेश बेटा,
No? Ma'am, can I give one point? Yes बच्चे, you can give. Um, Yes. in that they would be rich in their culture and rituals. They can show their forest products. No. Yes, they can show their forest product and the uses of forest which general community don't know about. ठीक है? Yes, ma'am. Any other point बच्चे? If you want to add any point in this story? No? These are the basic point only, that how business persons are involving in their mining project, and for the success of their mining project they are cutting the forest, okay, and for the mining project they have to displace those Adivasi community which are not getting equal, you can say, economic you can say facilities and social राइट्स. ठीक है, ना तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो पाते हैं, ना वो सोशली स्ट्रांग हो पाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे. रिया, रीड आउट नेक्स्ट क्वेश्चन. The statement that economic marginalization and social marginalization are interlinked. Why? ओके, इकोनॉमिकली सोशलाइज्ड एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड. यस, हाँ जी, इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली मार्जिनलाइज्ड. देखिए बच्चे, दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और क्वेश्चन में ही यही आपसे पूछा गया है. हाउ? फाइन. अब देखिए, जो मार्जिनलाइज पर्सन है वो अपना प्रॉपर प्लेस छोड़ के कहाँ पे आके रहने हैं, सिटीज़ और टाउन्स में आए यहाँ पे वो रहने. ठीक है, यहाँ पे जस्ट एकदम से आते हैं, दे डोंट हैव एनी जॉब, उनके पास कोई जॉब नहीं है, दे डोंट हैव एनी ऑक्यूपेशन टू प्रोसीड. ठीक है, तो उनके पास क्या है, जो इकोनॉमिकली है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक करते हैं, फील करते हैं. ठीक है, एकदम से अगर आप कहीं दूसरी प्लेस पे जाते हो तो सबसे पहले चीज़ आपके पास आपको क्या रिमाइंड आती है, मनी. ठीक है, अगर मनी की आपको बहुत ज़्यादा नीड की वहाँ पे फील होती है. अगर आपके पास मनी है तो आप उसके बाद अपना खुद का जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आपका सेल्फ बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं. फाइन. नेक्स्ट आता है आपका सोशली. वो किस तरीके से इंटर रिलेटेड है कि अगर आपके पास आप इकोनॉमिकली आप अगर वीक हो तो आप सोशल जो एक रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में, जो आपके लिंक्स होते हैं, आप वो प्रॉपरली उनसे सेटिस्फाई नहीं होते हो. पीपल डू नॉट ट्रीट यू इक्वली विद अदर कम्युनिटीज़. ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिकली यू आर वीक ना, तो सोशली भी लोग आपको क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं बच्चे. ठीक है, सो दैट्स वाई इकोनॉमिकली एंड सोशली आर इंटर रिलेटेड. क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, Sejal, you can go, and your class is also over, beta. We have discussed all NCERT questions, so this was all about your today's class. Okay, you can leave the class now. Thank you so much.